Hi and welcome to FYI Plus. Thank you so much for connecting. It got disconnected and we are back discussing what we are talking about. Today is a big day because Bombay High Court has given its verdict on the petition filed by Sushant Singh Rajput's sister Priyanka Singh and Meetu Singh, and High Court has said certain very important things. Bombay High Court in its verdict has said that prima facie it appears that the investigation against Priyanka Singh and doctor of the RML hospital, Tarun Kumar, should continue. There is no reason that the investigation against Priyanka Singh and Dr. Tarun Kumar should stop. There is no reason for that. So that investigation must continue and CBI should investigate. That's point number one. Point number two, it said as far as Sushant Singh Rajput's second sister, Meetu Singh, is concerned, the allegation of Riya Chakravarti against her is wrong. And hence, the FIR is being quashed against Meetu Singh. So, FIR filed by Riya Chakravarti against Meetu Singh has been quashed. FIR filed by Riya Chakravarti against Dr. Tarun Kumar of RML Hospital and Priyanka Singh, Sushant Singh Rajput's sister, will be investigated by the CBI. That's what the order is all about. And that's a very critical order. In its observation, the two judges clearly pointed out that prima facie it appears that Priyanka Singh, allegation against Priyanka Singh seems to be correct, and that needs to be investigated, and there should not be any impediment in the investigation of the case related to Priyanka Singh. So that's what the CBI and that's what the Bombay High Court has said. It has also not accepted CBI's point of view that Bombay High Court, Mumbai Police was not well within its right to register an FIR, because CBI said that Mumbai Police was wrong in registering the FIR, because that FIR should have only been registered by the CBI. One second. So that's where it all stands. Bombay High Court has passed a very important order in this case, asking CBI to investigate the role of Priyanka Singh in this case. Exactly what has Priyanka Singh done to procure the prescription that was given to her by Dr. Tarun Kumar of the RML hospital in Delhi. Now, how far was that correct? Is that right? Not right. I can't see any of the messages coming, so I'm not sure if people are able to watch me. I'm not very confident about it because I here can't see any of the messages on my message box. So please do let me know. I don't know whether I'm audible or visible to you or not, but yes, I think few messages I can see on YouTube. So yes, you guys can see me. Anyone who wants to connect and speak, please, you can. We are here talking about the case. Last time we lost the connection. Rijoy was there, Sarvani was there, and I could not connect them. I request those who want to speak on the topic can come and connect. There seems to be some problem. That's what I feel network-wise. I am not very confident if I am reaching you or not, but we can in YouTube. I don't know the status as far as Facebook is concerned. Let me just check Facebook also so that I am able to speak to you, because a lot of people wanted to connect. They sent me messages. We wanted to connect, but then I could not because the connection was lost. So one second. Let me see if I am visible on Facebook or not. Yes, Sarvani has joined the broadcast. There's no message coming, but yes, I can see her. Let me just check. Sarvani, just hold on. I'm just checking if on Facebook I am visible or not. Yes, I am. Okay, perfect. So it doesn't matter if the messages are not coming. That's not a problem. It can come later. But all of you are there, so that's most important for me.
let me connect Sarvani and let's start it. All those, Rejoy, if you're listening, you are free to connect the platform now. I'm more than willing to speak to you. Thanks. All those who are here, please quickly connect. Yes, Sarvani, go ahead. Yes, we have been. One second, Sarvani. One second. Yes, Sarvani, please go ahead. Yeah. Yes, we all have been waiting eagerly for this verdict, sir, from a long time. मुझे ऐसा लगता है, सर, कि उन लोगों को वर्डिक्ट, और जैसे अभी पारस जी बोल रहे थे कि आई थिंक उनको और हमारे फेवर में, मैंने फैमिली के फेवर में देना चाहिए था, बिकॉज अभी सर इट्स जस्ट अ मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन है. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि रिया चक्रवर्ती का जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज ओनली ऑन व्हाट द प्रिस्क्रिप्शन इज. बट ये वो कैसे कह सकती है कि प्रिस्क्रिप्शन जो लिया है सुशांत ने, जो दिया गया था उनके सिस्टर्स को, उन्होंने वो मेडिसिन लिया है कि नहीं. तो आई थिंक ये सब भी इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके हिसाब से तो 8 जून को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था सुशांत को व्हेन शी वेंट आउट ऑफ हिज हाउस. तो फिर उनको ये अंदर की खबर कैसे पता चल रही है कि दीदी आई, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बदला, एंड यू नो. तो आई थिंक ये सब भी थोड़ा देखना है. अगर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के इसमें तो आएगा ही वो, बट मुझे लगता है कि उनको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, सो दैट यू नो ये और डिटेल्ड इसमें हो, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आई थिंक सीबीआई ही कर रही है, तो सीबीआई को वापस से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलने का कोई पॉइंट है नहीं, बिकॉज इवन सीबीआई ने वहां पे अपना पक्ष रखा है. तो वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो करेंगे. बट एज फार एज आई थिंक, सर, सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर तो आई थिंक बहनों के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि उनके वजह से सुशांत की मौत हुई है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. हो भी सकता है कि जो मेडिकेशन रिया प्रोक्योर कर रही थी फॉर सुशांत बिफोर ही डाइड, उसका भी तो इफेक्ट हो सकता है ना, सर. करेक्ट. एंड मीतू दीदी तो 12th को निकल गई थी, एंड कुछ फोटोज जो रिया के आए थे, आई डोंट नो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, वो तो खुद रिया के इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट था. वो देख के तो लगता है, सर, कि शी वेंट बैक टू सुशांत हाउस ऑन द 13th फॉर सम बर्थडे पार्टी. वो बर्थडे का केक लेके जो वो वहां पे थी, तो हो सकता है कि फिर से उन्होंने अपना. टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर, आर यू डिसअपॉइंटेड और यू आर ऑफ द व्यू कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर से सब कुछ बदल जाएगा? व्हाट इज योर पॉइंट? एक्चुअली यहीं पे सारा कुछ हो सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ये क्लियर था पहले से ही. तो आई डोंट थिंक बेचारे फैमिली को वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई नौबत आती अगर उन लोग यहाँ पे उसको सॉल्व कर दिए होते. तो जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट others can also join in. We are here, we are not going anywhere. We will talk about this case. I'm just waiting for the court order to be sent to me. I've already asked somebody to forward me the detailed order that the Bombay High Court has given. So the moment it comes, I'll read that out to you. आप सब लोग कनेक्ट कीजिए, जो लोग बोलना चाहते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं. Last time it got disconnected and I could not take Rejoy and Sarvani. So Sarvani is already there, Margaret is already there. Rejoy, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कनेक्ट कीजिए. मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूं सरवनी, एंड देन वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इट. जो आज ऑर्डर आया है बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई कैन सी द मैसेजेस आल्सो, सो आई नो दैट यू पीपल आर देयर, सो थैंक यू सो मच. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जो कहा है, उसने इस केस की शक्ल बदल दी. ये नहीं आप कह सकते कि अब ये केस वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, या इन्वेस्टिगेशन वैसे ही चलेगा जो पहले चल रहा था. अभी तक इस केस में एक फंडामेंटल चीज है, और वो ये है कि चाहे वो सीबीआई का केस हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस हो, या चाहे वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस हो, ये तीनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स प्राइम सस्पेक्ट है, वो है रिया चक्रवर्ती. रिया चक्रवर्ती, उनके ब्रदर और उनकी फैमिली, ये प्राइम सस्पेक्ट है, नेम्ड बाय मिस्टर के सिंह, फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, इन द एफआईआर फाइल्ड बिफोर द पटना पुलिस, which was subsequently transferred to Bombay to CBI, and then stamp of approval was given on that by the CBI, by the Supreme Court. Supreme Court ने उस पर मोहर लगाई, और उसके बाद CBI ने 19 अगस्त से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया. तो पहला केस तो CBI का है, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस जो उनके फादर ने फाइल किया अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, हर ब्रदर शौविक चक्रवर्ती, उनकी फैमिली यानी मदर, फादर,
plus all those who were present inside the house. I will try and correct the names of four people. Generally, I slip the Keshav's name, but इस बार मैं कोशिश करूंगा चारों नाम मुझे याद रहे. सिद्धार्थ पिठानी पहला शख्स इंपॉर्टेंट है, नीरज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपेश सावंत बहुत इंपॉर्टेंट है और केशव बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चार लोगों के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस फैमिली ने भी लगाए. उसके अलावा जो प्राइम सस्पेक्ट है सीबीआई के केस में, दैट्स रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती एंड द फैमिली. कमिंग टू द सेकंड केस जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रजिस्टर किया, वो दो केसेस रजिस्टर किए. एक केस है सीबीआई केस है जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड है, जिसमें रिया चक्रवर्ती इज द प्राइम सस्पेक्ट एंड ऑल्सो शौविक चक्रवर्ती. दूसरा केस है जो बॉम्बे का जो ड्रग पूरा ड्रैगनेट है, ड्रग ड्रैगनेट, उससे रिलेटेड है, वो भी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है. केस है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया, वो है फाइनेंशियल बंगलिंग का, जो क्लेम है फादर का कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारे पैसों को इधर से उधर किया. उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस चल रहा है, वो भी रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में. तो ये तीनों ही केस में अब तक इन्वेस्टिगेशन रिया चक्रवर्ती के इन एंड अराउंड घूम रहा है. इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें फैमिली का कोई भी मेंबर इन्वॉल्व हो या फैमिली को लेकर कोई भी एंगल इन्वेस्टिगेट हो रहा हो. आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर फैमिली या सीबीआई इसको चैलेंज नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट में तुरंत, तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन फैमिली के एक की मेंबर प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में भी स्टार्ट होगा. वो ये कि क्या प्रियंका सिंह ने बगैर सोचे समझे एक प्रेस्क्रिप्शन लिया डॉक्टर तरुण कुमार से आरएमएल के और दवाई बदल दी सुशांत सिंह राजपूत की, और उसके कारण जैसा रिया चक्रवर्ती का एलिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया. अब इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं मिला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ सुसाइड से हुई या सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ. सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसलिए हम लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहते. लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ये कंक्लूड किया है कि प्रियंका सिंह ने जो दवाई बदला और मीतू सिंह ने उनका साथ दिया, डॉक्टर तरुण कुमार का वो प्रेस्क्रिप्शन है, इसके कारण सुशांत ने सुसाइड किया. आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मीतू सिंह के अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो बेबुनियाद है. रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मानचंडे प्रूव नहीं कर पाए कि मीतू सिंह के अगेंस्ट में उनके एलिगेशन का कोई बेसिस है या कोई एविडेंस है. तो एफआईआर का वो हिस्सा जो मीतू सिंह से रिलेटेड है वो क्वॉश किया जाता है. सो दैट हैज बीन क्वॉश्ड. डॉक्टर तरुण कुमार जिन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया, उनका प्रेस्क्रिप्शन क्या सही है? क्या वो एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को वायलेट करता है, या फिर वो मेडिसिन जो दिया गया क्या उसके कारण उसकी मौत हुई? इस पर सीबीआई हैज बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट. सो द रोल ऑफ डॉक्टर तरुण कुमार vis-a-vis द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू सुशांत सिंह राजपूत, और क्या सुशांत सिंह राजपूत और डॉक्टर तरुण कुमार के बीच कोई कंसल्टेशन हुआ था या नहीं हुआ था, दिस सीबीआई विल हैव टू इन्वेस्टिगेट. नाउ द सेकंड सिस्टर प्रियंका सिंह का ये कहना था अब तक, जो उनके लॉयर हैं विकास सिंह ने कहा कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में ये गलत हैं, क्योंकि ये आफ्टर थॉट है, 90 दिन बाद फाइल किए गए हैं और ये फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए किए गए, ये फैमिली को विक्टिमाइज करने के लिए किए, फैमिली के को विक्टिम से एक्यूज बनाने के लिए किए गए. हाईकोर्ट ने सीबीआई के उस स्टैंड को रिजेक्ट किया कि मुंबई पुलिस हैज नो राइट टू रजिस्टर एन एफआईआर. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई हैज टू इन्वेस्टिगेट इट and see whether Priyanka Singh was wrong in getting this prescription, और जो मेडिसिन दिया गया क्या उसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई. प्राइमा फेसाई बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक द रोल ऑफ प्रियंका सिंह and the allegations against Priyanka Singh needs to be investigated. So these are the three parts of the order that the Bombay High Court has given. अब उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, बहुत सारे रीजंस दिए गए होंगे, वो ऑर्डर आएगा तो मैं बताऊंगा. लेकिन अभी जो सामने है वो ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि द रोल ऑफ प्रियंका सिंह हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई. सीबीआई ने कहा मुंबई पुलिस हैड नो राइट टू इन्वेस्टिगेट द केस. तो मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने सिर्फ एफआईआर किया और एफआईआर करके हमने ट्रांसफर कर दिया. शायद बॉम्बे हाई कोर्ट को ये स्टैंड करेक्ट लगा है और सीबीआई के स्टैंड को गलत माना. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस द फैमिली हैज? व्हाट आर द ऑप्शंस द सीबीआई हैज? CBI has the option, family has the option now to go and quickly challenge this order before the Supreme Court, so that investigation against Priyanka Singh is stopped. Investigation against the doctor is stopped. Otherwise, अगर वो इसको challenge नहीं करेंगे
तो सीबीआई विल हैव टू इन्वेस्टिगेट इट, क्योंकि कोर्ट ने कहा है देयर इज नो इम्पेडिमेंट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड इफ देयर आर एलिगेशंस दोज मस्ट बी लुक्ड इनटू. दिस इज वेयर सर्वनी द केस स्टैंड्स. अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैमिली या सीबीआई इसको कितनी जल्दी इन्वेस्टिगेट को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट. जब तक चैलेंज नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो अब करना पड़ेगा, शुरू होगा. तो फिर अकॉर्डिंग टू यू वेयर हाउ डू यू व्यू दिस केस एंड द ऑर्डर नाउ? द ऑर्डर तो बहुत क्लियर है सर. अभी आप जैसे कह रहे हैं सर, फैमिली को बहुत क्विक एक्शन लेना पड़ेगा इफ दे डोंट वांट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन देम टू क्लियर कि उनका जो पक्ष है वो सही है. बट जहां तक मुझे लगता है सर ये कि हम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया हुआ था कि ये पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, तो आई थिंक जिस तरह से रिया ने जाके बहुत आउट ऑफ द वे शी वेंट एंड शी फाइल्ड अ केस इन बांद्रा, तो वो उनके इस पे भी नहीं था. कहाँ पे एनसीबी के पास वो इंट्रोगेट करने के बाद शी वेंट, आधी रात को वो जाके शी फाइल्ड अ केस. तो 7 p.m. she reached the Bandra police station at 7 p.m. on the 7th of September. And she stepped out of the police station at 12:30 quarter to 1 with the FIR on the 8th of September. तो ये तो सर एक क्लियर साजिश रिया की तरफ से लग रहा है कि यू नो टू पुट द फैमिली इनटू कल्प्रिट कटघरे में, मैंने उनको कटघरे में खड़ा करने की वो कोशिश कर रही है. और जिस तरह से सर हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था कि जिस तरह से शी मेस्ड अप कि किसके हस्बैंड कौन है, किसका नाम क्या है, तो नीतू सिंह became नीतू सिंह and she did not. तो ये मैंने ये क्लियरली शो कर रहा है कि शी वांटेड टू पुट द फैमिली इनटू द कल्प्रिट पोजीशन एंड अपने आप को वो एक विक्टिम की तरह दिखाना चाहती थी कि मैं एक विक्टिम हूँ जस्ट बिकॉज आई लव्ड एसएसआर. मुझे इन लोगों ने इस तरह से ये मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है. बट सारे तरफ से तो सर सिर्फ वही एक प्राइम सस्पेक्ट है. तो ये एक चीज पॉजिटिव ये है कि अभी तक दो बहनें सवालों के घेरे में थी. हाँ. मीतू सिंह और प्रियंका सिंह. मीतू सिंह को क्लियर कर दिया गया कि मीतू सिंह अगेंस्ट में एलिगेशन का कोई बेसिस ही नहीं है. ये बुनियाद एलिगेशन है रिया चक्रवर्ती की. रिया चक्रवर्ती ने शायद जानबूझ के मीतू सिंह का नाम डाला है बगैर किसी एविडेंस. तो बाहर हो गई. लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम यह है कि प्रियंका सिंह के अगेंस्ट जो एलिगेशन था उसको क्वॉश नहीं किया. तो वही तो सर मैं अभी बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, इसका क्या ठोस सबूत है कि सुशांत ने वही मेडिकेशन लेके उसकी मौत हो गई? क्योंकि पोस्टमार्टम में तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला सर. नथिंग हैज कम आउट इन द पोस्टमार्टम. तो इसका बेसिस क्या है? मैंने हाई कोर्ट भी किस बेसिस पे वो बोल रही है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? पोस्टमार्टम का तो कुछ है नहीं. हाई कोर्ट जो कह रही है वो ये कि एक एलिगेशन फाइल किया गया है that the medicine that was prescribed by Dr. Tarun Kumar and procured by प्रियंका सिंह, जो प्रियंका सिंह ने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर तरुण कुमार से लिया वो फेक है. ये एलिगेशन है. ओके. नंबर 2, उसमें जो दवाई लिखे गए हैं वो दवाई एनडीपीएस एक्ट के वायलेशन में है, यानी वो दवाई दिए गए हैं जो कि बैंड सब्सटेंस है. ओके. तीसरा एलिगेशन ये है कि बगैर किसी कंसल्टेशन के वो मेडिसिन दिए गए. और चौथा एलिगेशन ये है कि इन मेडिसिन चेंज करने के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली. ये चौथा एलिगेशन है. ये रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, ऐसा बार बार जो कह रही है उससे लग रहा है. लेकिन ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जिन्होंने देश के होम मिनिस्टर को लिखा था, आई वांट टू नो व्हाट इज द रियलिटी. हाउ इज इट पॉसिबल दैट रिया चक्रवर्ती स्टेइंग विद सुशांत सिंह राजपूत फॉर 14 months doesn't know the fact कि क्या प्रेशर. रिया चक्रवर्ती को बताना चाहिए दुनिया को कि सुशांत पे क्या प्रेशर था, कौन से लोग थे जो प्रेशर डाल रहे थे, और उन्होंने कैसे कंक्लूड कर लिया. वही तो सर मैंने इन्वेस्टिगेशन कि ये सुसाइड है. और सर जिस तरह से उनके खिलाफ आया है सारे एनसीबी के तरफ से चैट्स वगैरह जो भी रिलीज हुए थे, तो जो वो दे रही थी सुशांत को, क्या वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स नहीं थे सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है. पॉइंट ये है कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने किया वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था सर. लेकिन अब पहली बार हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उस सीबीआई ने क्या एफआईआर रजिस्टर किया है? सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया है फ्रॉम 8th of June से लेकर 14th of June के इंसिडेंट्स को.
केवल 14 जून को नहीं किया। अब अगर ये एलिगेशन रिया चक्रवर्ती लगा रही है, बहुत थिंक अबाउट इट, थिंक तो अबाउट ये इट। ने बहुत इंटेलिजेंटली एज अ लॉयर ये स्ट्रेटजी तैयार की उन्होंने 8 जून को, which any डिफेंस लॉयर विल डू। अगर रिया चक्रवर्ती का ये एलिगेशन है कि 8 जून से लेकर 14 जून के बीच मेडिसिन बदल दिया सुशांत सिंह राजपूत का, इसीलिए उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो जानती हैं सीबीआई इसी पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर। अब अगर इस पार्ट में अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसके कारण उसकी डेथ हुई, तो फिर कल्प्रिट कौन बनता है? फैमिली बनती है। इस पीरियड में सुशांत के साथ था, तो सुशांत के साथ कौन था? मीतू सिंह थी, इसलिए उन्होंने मीतू सिंह का नाम डाला, लेकिन हाईकोर्ट ने मीतू सिंह को अलग कर दिया। अब एक चीज तो बहुत साफ हो गई इससे कि मीतू सिंह रीच सुशांत सिंह राजपूत हाउस ऑन द 8th जून। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर को 8 जून को छोड़ा। हाईकोर्ट ने कहा मीतू सिंह का कोई लेना देना नहीं, यानी मीतू सिंह इज आउट ऑफ रडार। अब सिर्फ एक सवाल यह है कि जो प्रोक्योर किया गया प्रिस्क्रिप्शन वो सही है, नहीं है, क्या वो दवाई के कारण सुशांत की मौत हुई? अब ये पार्ट का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को करना पड़ेगा। अभी तक सीबीआई इसी पार्ट का इन्वेस्टिगेशन रिया एंगल से कर रही थी, अब वो रिया प्लस प्रियंका एंगल से करेगी। दिस इज वेयर द कॉम्प्लिकेशन इज। तो अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर सीबीआई के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को इस एंगल से नहीं करना, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, बट सर अगर मान लीजिए कि उन लोगों ने जो किया है प्रोक्योर, और अगर मान लीजिए उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है अहेड, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई ये होगा कि if the prescription is absolutely correct and जो अगर वो प्रूफ कर सकते हैं, तो देन तो उनको कोई डरने की बात है नहीं, क्योंकि फैमिली भी मुझे नहीं लगता कि फैमिली ने में ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चैलेंज करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ही रुक जाएगा। दिस इज व्हाट यस। तो वो एक ही ऑप्शन अभी बहुत इमीडिएटली आई थिंक उन लोगों को लेना चाहिए, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। मुझे नहीं लगता था कि फैमिली को इसमें लेके आने का कोई पॉइंट है, बट अब हाई कोर्ट ने वो दिया, तो नाउ वी कैन नॉट क्वेश्चन द हाई कोर्ट। वी आर नॉट क्वेश्चन दैट। जो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। दैट्स इट। हां, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। लीगल स्टेजेस होते हैं, मैंने आपको स्टेजेस गिनाए थे। अब अगला स्टेज है कि प्रियंका सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार और सीबीआई क्या इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा ये केस रुक जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी, परफेक्ट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इस केस का इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी होगा। सबसे जरूरी अभी ये है कि फैमिली के लॉयर विकास सिंह या सीबीआई के लॉयर या सीबीआई वो इस केस को चैलेंज करे, सो दैट इन्वेस्टिगेशन इज स्टॉप। बिकॉज सीबीआई को भी सेटबैक लगा है सरवनी, आपको समझना चाहिए। सीबीआई ने कहा है, उसको हाई कोर्ट ने लगता है तो दैट माने पूरी इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ही कर रही थी सर। जब सीबीआई ने अपना पक्ष रखा है वहां पे, तो I don't know how it got caught as well, but ने क्लियरली कहा ना कि मुंबई पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इसको एफआईआर करने का। यस, हाई कोर्ट ने वो कर दिया। सीबीआई ने कहा कि जो कुछ भी दवाई दिए गए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी नहीं। सीबीआई ने कहा कि जो पहले दिए जा रहे थे उसमें था, लेकिन हाईकोर्ट ने एक भी बात नहीं मानी है प्रियंका के केस में। इसका मतलब सीबीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट से तो झटका लगा है। अब अगर सीबीआई को उसको करेक्ट करना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। यस, स्टैंड को काउंटर कर रही है ना मुंबई हाईकोर्ट ने। सीबीआई के स्टैंड को काउंटर किया, फैमिली के स्टैंड को थोड़ी काउंटर किया। फैमिली ने तो सीबीआई किया है, और सीबीआई को भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। सीबीआई को भी अपना अभी क्लियर करना पड़ेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नाउ इट हैज टू बी क्लियर, क्योंकि हम इतने महीने से वेट कर रहे हैं कि कुछ निकले इसका हमें रिजल्ट। एंड दिस रिजल्ट कमिंग आउट के साथ मीतू दी नहीं थी, नीतू दी थी। नहीं, आप गलत, मीतू आर रॉन्ग। नीतू सिंह इज द रानी दी थी। नीतू सिंह ओब्लिक रानी, उनका घर का नाम रानी है और बाहर का नाम नीतू सिंह है, NEETU, नीतू सिंह, सेम एज द नेम ऑफ रणबीर कपूर मदर। वो उनके सबसे बड़ी बहन है, वो आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है।
Meetu Singh, Meetu, Meetu Singh is a cricketer, and she's Cricketer. the one who's being talked about. So, Sabika, Yes. please get your facts corrected. Yes, please go ahead. तो sir, I'm disappointed, but I'm hoping कि I think family lawyer and CBI will take a quick action in going to Supreme Court, and hopefully we'll see a positive All right, all right. note there. All right, Thank sir. you, sir. Just stay. Thank you. Yeah, sure. Yeah, Margaret, please go ahead. Anyone else who want to connect? I was waiting for Rejoy. Rejoy is not connected, so I was waiting for him to come because he desperately wanted to talk. Yes, Margaret, please go ahead quickly. First of all, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि is CBI saying that Ria's FIR is totally not lawful. Like अगर law में नहीं है कि वो इस तरह से जाके FIR कर सकती है, then how can High Court oppose it? Law तो सबको पता है ना. Those who are in CBI, those who are in police, हाई कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कितना कंफ्यूजिंग है हमारे ये लॉ सिस्टम. इवन आई एम कंफ्यूज एक्चुअली. इफ सीबीआई सेइंग दैट व्हाट शी हैड द एफआईआर दैट शी हैज लॉन्च्ड इज रॉन्ग, वो लेना नहीं चाहिए था, वो रॉन्गली एफआईआर. In only one part, High Court is saying, see, the FIR is wrong as far as Meetu Singh is concerned. The FIR is correct as far as Priyanka Singh is concerned. That's what High Court is saying. But how come, like अगर FIR तो उन्होंने एक साथ किया, तो how can you make it in two parts? It can be made because दो different individual हैं और दोनों के रोल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कहा है that investigate the role of Meetu Singh and Priyanka Singh. High Court says Meetu Singh के अगेंस्ट में तो कोई एविडेंस ही नहीं है आपके पास, आप कुछ भी नहीं दे पाए, आप बता ही नहीं पाए, तो मीतू सिंह के रोल को क्यों इन्वेस्टिगेट करेंगे? जबरदस्ती हम किसी के रोल को थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो मीतू सिंह इज आउट बिकॉज ऑफ दैट. इट इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोल ऑफ द टू इंडिविजुअल्स. सो ऑन दैट हाई कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट कोई भी एविडेंस रिया चक्रवर्ती की तरफ से नहीं दिया गया वेयर शी कुड हैव प्रूव कि मीतू सिंह का कोई रोल है. तो मीतू सिंह हैज गॉट नो रोल टू प्ले, हेंस मीतू सिंह इज आउट. प्रियंका सिंह एंड डॉक्टर तरुण कुमार, इनके रोल है और दैट शुड बी that is what High Court has said. Okay, in that case, if they are saying that she had got the prescription from the doctor, तो यहाँ पर तो ये भी देखना है ना कि when Ria was giving him medicine and there is an WhatsApp chat of Sushant's father and Ria where he is insisting that I am a father, should know what medication you are giving. तब वो भी तो इसी में आता है, तो दे कैन चैलेंज दिस पार्ट आल्सो टू द सुप्रीम कोर्ट. इस बात को लेकर तो वो चैलेंज कर सकते कि उन्होंने भी तो नहीं बताया, उन्होंने भी फैमिली को कुछ नहीं बताया व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन सुशांत वाज टेकिंग. That is part of the original case. ये क्वेश्चन आएगा जब सीबीआई ओरिजिनल केस को जब कोर्ट सुनेगी, देन ये क्वेश्चन आएगा. ओरिजिनल केस इज वन व्हिच इज फाइल्ड बाय द फादर, उसमें आएगा ये क्वेश्चन. इस केस में नहीं है वो क्वेश्चन. इस केस में तो लिमिटेड है कि जो मेडिकेशन हुआ है उसमें वेदर द सिस्टर्स हैव अ रोल टू प्ले और नॉट. उसमें मीतू सिंह इज आउट. नाउ ओनली क्वेश्चन इज अबाउट प्रियंका. आई एम सेइंग बिकॉज़ हाई कोर्ट हैज आस्क्ड सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट, CBI's stand seems to have been rejected, so CBI will have to go and challenge it before the Supreme Court, or the family or Priyanka Singh has to challenge it. अगर आप challenge नहीं करेंगे तो then you will have to investigate. So अभी they have options. They have options clearly. Supreme Court is always an option, and that's what the legal system in India is. The best part is अभी पता चला. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग लगातार बोल रहे हैं कि why is she being allowed to go to Supreme High Court and why is she being allowed to go to Supreme Court when she is wrong. Now is the answer. अगर इंडियन सिस्टम नहीं होता, लीगल सिस्टम ऐसा नहीं होता, तो हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, तो फिर प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो जाता? अभी तो she has a choice, she has a chance to go and challenge that in Supreme Court. That is the beauty of our Indian judicial system. चाहे वो ये हो या वो पार्टी हो, सबको हक है. तो प्रियंका has the option right now, and that option is very clearly available. You go and challenge the order of the Bombay High Court before Supreme Court and get a favorable order from there. आप Supreme Court को convince कर दीजिए. I have no role to play. Okay. That is what important is. Whether they will go to Supreme Court or not.
Yes. Okay, I think they will go, sir. देखिए ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टोटल फेवर ये जो वर्डिक्ट आया इट इज मोर टुवर्ड्स रियाज फेवर. एक पॉइंट सिर्फ उनके फेवर पे गया है वो No, मीतू because सिंह. we have not seen the order completely, Margaret, so we don't know exactly what the order says. But it's that's what I said in the video very clearly when I was coming live immediately after the order came. I think we were one of the first to go on air with this because we got it very fast. So when that there are two parts of it. One setback to Riya Chakravarti. Riya Chakravarti made Meetu Singh and a party in this case. So Meetu Singh has been cleared. So that's a setback to Riya Chakravarti. But Yes. the setback to Priyanka Singh is that she is not cleared. So that's a setback, sort of a setback for Priyanka Singh. Otherwise, the order is not one way this way or one way that way. कि जो भी रिया चक्रवर्ती ने कहा सब सही है या जो कुछ भी सीबीआई ने कहा सब सही, ऐसा नहीं है. It's a setback to CBI, I would say, more than anyone else. It's a setback to CBI because CBI should have proved that we are investigating the case and there is nothing found. तो फिर सीबीआई क्यों नहीं कर पाई? तो सर एक तो है कि वो प्रेस्क्रिप्शन ये तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज ऑल देयर चॉइस एंड आई एम श्योर दे विल डू इट. बट सीबीआई तो उस मेडिसिन के ऊपर भी तो ऑब्वियसली काम कर ही रही है. तो अगर उनके पास है कुछ भी एविडेंस, क्या जब वो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करेंगे तब क्या वहां पर ये लोग देंगे, मतलब सीबीआई विल फ्लैश देयर or no, they will keep it reserved to themselves till they close or the case? नहीं, come again. What are you asking? I'm saying, see, it is a part of the investigation itself, no? That prescription that Priyanka Singh has got for Sushant. So CBI is already investigating on that also, right? Yes. No. CBI was not investigating that prescription. Sir, अगर कुछ भी मिलता है. 1 minute. CBI was never investigating that prescription. Okay. Now it will have to investigate. If they don't challenge it, then they will have to investigate. Okay. I thought because whatever WhatsApp chat they had got, whatever medication का जितने भी prescription मिला है, ये सभी CBI as a main case. No, you are right. CBI will look into every single aspect, every single facts. And these facts are on record. You are correct there. But the role of Priyanka Singh or the role of the doctor, that CBI was never investigating because it had nothing to do with it. So that's what that thing is. Okay. Yeah. So that is my point. So if they are investigating, if they get to know also the correct information they will be having. So if even Supreme Court says to investigate, उसके पास तो already है, तो क्या वो लोग वहाँ पर जाके flash out करेंगे कि yes, it is the prescription is correct or will it go? They have already said before the High Court. Please go through the facts. I have already mentioned that CBI has already stated everything. That according to us, there's nothing wrong that has been done. Still, High Court has asked CBI to look into Priyanka Singh's. That's the worry. CBI has said very clearly that Priyanka Singh ने जो prescription लिया डॉक्टर तरुण कुमार से, उसमें कुछ भी गलत नहीं. अच्छा, so if they have presented in front of High Court, so they can present in front of Supreme Court. That was my point. The High Court has its own view. High Court is free to take its own view. Everything that CBI says, High Court may not be convinced. Okay, just stay on. Let me connect Rijoy. He's connected, and also Renu. So first, Rijoy, we lost you at that time. I was about to connect you. Yeah, you were clearly audible. Okay. At that time, very good evening to you and to all the participants, and thank you, Sunilji, for allowing me to participate. If you ask me honestly, I'm unhappy. The judgment, which is like 50-50, Britannia biscuit जैसा हो गया, 50-50. एक तरफ it's good, एक तरफ again it's a delayed. Overall, if you see things like now, obviously they will go to CBI. The CBI will go to Supreme Court, whereas even Riya also will go to Supreme Court. Can go. Both of them can go. Will go. Can go. I clarify. Can go. And what you're saying, let's clarify that. Why Riya can go is because High Court has said that the FIR against Meetu Singh is quashed. So she wants to challenge, she can go.
So Yeah. CBI can go because High Court has said that CBI stand Exactly, is not sir. correct. Exactly. CBI stand is not correct. Now, And the Priyanka worry is the worry from my understanding, I may be wrong. The worry is that if the High Court can give squash the Meetu case and somehow tells the CBI to look into the case of this the Priyanka other Singh. sister, Priyanka yeah, Singh. Priyanka. Somehow I'm not doubting, but I'm unable to correlate that if a judgment is being made by the one of the highest court, ये दोनों चीज के लिए why it's different? I will tell you. Or Can I just yes, explain? please. Yes, please. The reason is that what Riya Chakravarti said in her FIR is that there was a clear attempt made by the family to change the course of medication of Sushant Singh Rajput, because of which he started taking a different medicine and his Right. medical status changed and he committed suicide. This is a simple stand, okay? In that, she said that two people whose role should be investigated. One is Meetu Singh and one is Priyanka Singh. During the hearing of the case, because the sisters approached the High Court on 4th of October, from 4th of Right, sir. October till 7th of January, in the 3 Right. months, when High Court was listening to the sides, nothing came on record, no evidence, no proof, nothing to suggest that Meetu had any role To play. in procuring that prescription, or in Sushant's consultation with the doctor, or contacting the doctor, or having knowledge of this. So it appeared that Riya deliberately involved Meetu Singh only because Exactly. Meetu Singh was in his house from 8th June till 12th of June. So because she was there in the house, she thought to involve her. And High Court said, no, there's nothing, no material on record. कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताता है कि मीतू सिंह अगेंस्ट में आपके पास कुछ भी है, तो इसलिए मीतू सिंह का नाम ड्रॉप कर दिया. लेकिन प्रियंका सिंह के बारे में prima facie, as they have noted, prima facie, it is proved that the allegation seems to be correct, that she acquired the prescription, and hence her role should be looked into, and there should not be any impediment regarding that. Okay. I fully understand what you are saying, sir. But now, if you see that we were under the impression that correct me if I'm wrong, sir. We were under the impression that ये quash हो जाने के बाद it will be a clear platform for CBI to come up, or whatever final reports they are on the verge of completing, it will become easier for them, and maybe 2 months, 3 months down the line, or 4 months down the line, they will be in a position to come up with the final report. Oh. Right. Carry on. Okay. Now having this scenario cropped up, now CBI is in slightly in a back foot. Now CBI has to again go to Supreme Court to prove. So don't you think that overall the time lag, I would go on the time lag, the time period which we were expecting, another 3 months, 4 months, now again takes another, as I told you, it might even take a year. So don't you think this judgment, this 50-50 judgment will take an extended time frame? I will tell you. Now, first of all, what is most important and most critical is कि प्रियंका सिंह के जो लॉयर हैं, विकास सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार के जो भी लॉयर हैं वो, और तीसरा सीबीआई, ये इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में. यस, सुप्रीम कोर्ट में क्या ये चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. और चैलेंज करेंगे तो कब करेंगे? अगर आप मान लीजिए चैलेंज करते हैं और आप 15 दिन बाद चैलेंज करते हैं या 1 महीने बाद चैलेंज करते हैं, तो उस पीरियड में आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. यू कांट बी साइलेंट, ओके, बिकॉज अदरवाइज द पार्टी who has demanded investigation will put a plea before the High Court that CBI is not following your directions. So it is extremely important at stage number 1 to know when will they challenge it. This has to be urgently challenged. And so suppose if they don't challenge?
I will answer that. So first stage is whether they are challenging, yes or no, or not, and when they are challenging. If they challenge it immediately until the Supreme Court has heard it and decided, nothing will move in this case vis-a-vis this one. So, like as far as the other case is concerned, which is the main case, उसमें तो 3 महीने से कुछ नहीं हो रहा है ना रिजॉय. तो जब ये केस अगर चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है. करेक्ट. So you are right there कि the silence which we are noticing may continue if they decide to challenge it before the Supreme Court to see Supreme Court इस केस पर क्या कहता है. Or till then maybe we will have to witness the same silence that we have witnessed last 3 months. Okay? If they decide not to challenge it, then CBI will have to get into action. There's no way they can escape. They will have to get into action because High Court has now told you to look and clear this. That did he die? That's what it in simple terms means. That did he die because of the change of medication? That means did Sushant Singh Rajput commit suicide because of the change of medication? But what is CBI investigating? CBI क्या investigate कर रही है? CBI investigate कर रही है कि क्या ये suicide है या murder है. तो फिर अभी ये केस में इन्वेस्टिगेशन क्या होना है कि क्या इस मेडिकेशन चेंज के कारण उसने सुसाइड किया. यही तो इन्वेस्टिगेशन. दैट इज व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल. दिस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होना है तो पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करके ये रूल आउट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. इस मेडिकेशन चेंज के कारण उसकी डेथ नहीं हुआ. राइट. अगर आप नहीं प्रूव करेंगे तो फिर अगर ये प्रूव हो गया कि इस मेडिकेशन के कारण उसका डेथ हुआ फिर तो सुसाइड प्रूव हो जाएगा. तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इस मेडिकेशन के कारण उसकी डेथ नहीं हुई. बिकॉज इफ यू वांट टू प्रूव दैट इट्स नॉट अ सुसाइड. बट द पॉइंट इज द सेटबैक दैट द सीबीआई हैज गॉट इन Bombay High Court will be discussed. So इसलिए CBI will certainly challenge it, according to my understanding. Certainly challenge it. तो you are right there. अगर वो challenge होता है तो जब तक Supreme Court का order नहीं आएगा, we will see the same silence that we have witnessed. Yes, go ahead. बाकी NCB का काम चलता रहेगा, which is ongoing. Those will continue. They will continue. But specifically from CBI point of view, there won't be no announcements. Your understanding is right. If they challenge it before Supreme Court, तो your understanding is absolutely correct. फिर जो साइलेंस हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये केस बहुत क्रिटिकल है. ये केस बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये केस में इन्वेस्टिगेशन क्या करने बोल रहा है. आपको बोल रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि उस प्रेस्क्रिप्शन के कारण जो मेडिसिन चेंज हुआ उसके कारण डिड ही डाई बिकॉज ऑफ दैट और नॉट. Right. Sir, before I take the backstage, there's one request from my end. Probably it might be the right forum, it might not be the right forum. You will be the first and last person to take the call on it. Regarding Vikas Sharma, now there are many stories coming up. The Republic one, the person who died of Kodev. So if you think, and if you on your in your front, if you have done certain inquiries or investigation, kindly take up this topic if you feel it is relevant. Okay. In due course of time. Let me think about it. Okay, all right. Okay. Thank you, Any sir. Other point you want to make? Any other point, Rijoy, you want to make? No, sir. I will be at the backstage. If required, I'll come up. Perfect. And in any case, we'll be doing a speak up on this tonight, so you can come and speak at that time. Yeah. We'll have more details, and maybe we'll get the judgment also by then. Okay. Right. Sir. Okay. Let's connect Renu. Renu is here, so let's quickly connect Renu. Yes, Renu, please go ahead. Yes, disappointed. Judiciary say yes, I am always disappointed with the judiciary and I will be always disappointed because the kind of time they take and the kind of verdict they give, which I feel maybe they are the best person who are sitting over there and they are thinking lots of things. मतलब एक चीज को नहीं सोच के बहुत चीजें सोचते होंगे. But again, जब एक accuse, अगर सर रिया चक्रवर्ती की जगह मैं अक्यूज नंबर 1 होती तो पहली बात तो मेरा केस कोई रजिस्टर ही नहीं करता. सबसे पहली बात, मेरा केस कोई रजिस्टर नहीं करता. 5 घंटे में कोई भी केस रजिस्टर नहीं करता. सही. इनका केस भी रजिस्टर हो जाता है,
उसके बाद फिर इनके ये जो केस करती हैं, एक बंदे के लिए वो क्वॉश कर दिया जाता है, दूसरे बंदे के लिए इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाता है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज दे हैव, वेरिन इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें उसका स्टमक एम्प्टी कहा गया है, फिर ऑल ऑफ अ सडन मेडिसिन की इंक्वायरीज कैसे, जब कुछ मिला ही नहीं उसके स्टमक में, तो ये लोग क्या कैसे पता करेंगे कि वो मेडिसिन की वजह से उसको हुआ कि नहीं हुआ? हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना सर. तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि चल क्या रहा है. अगर हाई कोर्ट इतना डीपली सोच भी रही है, इतना अलग अलग सोच भी रही है, तो क्या वो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने सामने रख के नहीं सोच रही है? और दे जस्ट एक केस हुआ है, बस मुझे उसके ऊपर कुछ वर्डिक्ट देना है, वो ऐसे वर्डिक्ट दे रहे हैं. मतलब आई एम नॉट, अगर एक केस रिलेटेड है तो उसमें आप सब चीजें रिलेट तो करिए कि भाई जब मुझे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जो कि जिसमें उसका स्टमक एम्प्टी बता दिया गया है, तो अभी मैं कहाँ से पता करूंगा कि उस मेडिसिन की वजह से हुआ है, ड्रग्स की वजह से, किसकी वजह से हुआ है? वो होता कैसे है, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है उसमें प्रॉब्लम है. जुडिशियल सिस्टम में कुछ चीजें लोअर कोर्ट के लिए हैं, कुछ चीजें हायर कोर्ट के लिए हैं, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये फंडामेंटल है, विच इज द ट्रायल स्टेज कि कैसे हुआ नहीं हुआ. ये सीबीआई जब भी इसमें चार्जशीट फाइल करती है और जब ये केस लोअर कोर्ट में हियरिंग के लिए आता है, तब ये सारी क्वेश्चन आएंगी जो आप. अगर मान लीजिए कल कोई भी हाई कोर्ट जाता है तो सिर्फ हाई कोर्ट वही एग्जामिन करेगा जो उस पिटीशन में लिखा हो. ओके. तो इसलिए बाकी चीजों में हाई कोर्ट जाएगा ही नहीं. कल मान लीजिए इसको सीबीआई ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ उस क्वेश्चन को देखेगा जिस क्वेश्चन पे ये है. जैसे पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती गई थी तो सीबीआई ने, रिया चक्रवर्ती ने पटना हाई कोर्ट के, पटना पुलिस के एफआईआर को चैलेंज किया था. तो उन्होंने सिर्फ डिसीजन पटना हाई कोर्ट के एफआईआर पे किया, उन्होंने फैक्ट्स पे कोई कमेंट नहीं कि क्या सही है क्या गलत है. उसी तरह अगर आज फिर सीबीआई जाती है या प्रियंका सिंह जाती है तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को करेंगे कि क्या प्रियंका के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या वो प्रिस्क्रिप्शन को का इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, क्या डॉक्टर के रोल को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. तो दे विल बी वेरी स्पेसिफिक, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे. जब ट्रायल के बाद वो दोबारा हाई कोर्ट में आएगा तब ये सारे क्वेश्चन आएंगे. ओके. हाँ सर, लेकिन सर मुझे मतलब नहीं, आई डोंट नो, जैसे कि मैंने कहा, यस आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट, एंड yes, we are waiting, so they should challenge for it, and I believe they will, because मतलब मुझे, हमें तो नहीं लगता कि इसमें किसी का रोल है. so let's see and let's hope for the best, because मतलब मेरा तो सबसे पहले यही था कि अगर मैं मेन अक्यूज्ड होती तो ये केस ही रजिस्टर नहीं होता, पहली बात. तो अगर कुछ और नहीं आपने ध्यान दिया था तो आप ये भी देते कि शी इज अ मेन अक्यूज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मुंबई पुलिस हैज registered this case when she is accused. This is a fundamental question. I'm sure that lawyer will of Priyanka Singh and the family will certainly raise this issue when it comes to the fundamental discussion on the case. तो पक्का होगा, मुझे लगता है इस बात उठेगा ही. I just request all those who are writing the message that please don't use words which are not correct. हम लोग बार-बार बोलते रहते हैं, आप लिखिए मैसेज जो लिखना चाहते हैं, but don't use inappropriate word या कोई ऐसा वर्ड जो अनपार्लियामेंट्री है या जिसको नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर ऑन द लैंग्वेज पार्ट. प्लीज डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज दैट्स derogatory in nature or personal in nature, because there is nothing personal about it. There is a case going on. There is, I understand the feelings, but keep your feelings within the limits of language. Don't use the language which becomes unparliamentary, derogatory, or personal. Yes. Yes. No, so nothing else. I am just disappointed, but yes, ray of hope is there कि नहीं होगा, justice होगा, but देखते हैं. We are waiting and we will be. Thank you for joining me, sir. All right. Bye. Thanks a lot. Yes, Rejoy wants to make a point. Okay. And I'll tell you the background behind it. ये जो मीतू जी है, please pardon me if you think I am saying something against her. Pardon me. One of my very close friend, she was teaching in a school in Faridabad. Just one second, Rejoy. Just one second. One second, Rejoy.
1 second. Vijay, just hold. Yes, Vijay, go ahead. Start. Yeah, Vijay, please go ahead. Yeah. So she was teaching that friend of mine. She was teaching one of the schools where Meetu was also teaching. Now, why I'm saying this, please listen completely to the entire thing. So when this Sushant thing happened, I was in touch with this lady on a regular basis, and we used to discuss because we were both very upset, like millions, about Sushant's death. Now, she told me that, Vijay, this Meetu was one of my colleagues, but she used to be very, very different in the school because we had a group and she was never in that group. Ye ho bhi sakta hai because everyone has his own group. And she used not to mix with any of our colleagues. Then she went back to Mumbai. Itna tak hi baat hua. To uske baad, so us din Meetu bhi aaya tha, like many things have been discussed about Meetu. If she had been there for 2 days, why did she go back, again come back, etc. etc. Sandeep Singh ko pehchanta nahi tha, uske saath bahut close tha, etc. etc. Let us keep all these apart. Correct. अब आज जो डिसीजन हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड सर, आज जो डिसीजन हुआ उसमें इट वाज फॉर मीतू अगेंस्ट प्रियंका. Don't you think, because since it's a very high profile case and involving so many top big shot people's name involved in this murder, and sometimes the court, the High Court or the Supreme Court also acts very peculiarly. I'm not saying that they are wrong. Peculiarly. You are not commenting on that. Is there an attempt being made to bifurcate is the wrong word, to allow means to separate, like Meetu is out, Priyanka is still in, right sir? So family ke andar mein, we don't know, you don't know, I don't know, उनके घर के अंदर में क्या माहौल है, कितना क्लोज बॉन्डिंग है या नहीं है. They are very close. They are very close. All the 4 sisters are very, very close. That much. Okay, except अभी ये हो जाने के बाद, is there any way to create some sort of confusion inside the group? ये मेरे दिमाग में आया. Maybe I'm wrong and I should be wrong. No way. No. This is just a legal battle which Vikas Singh has to fight. The family is all together. All the 4 sisters have brilliant relationship and they are very close. Okay. No chance of any confusion. ठीक है जी. Okay. Agreed. Completely agreed. Okay. Perfect. Thanks, Rajat. Thanks a lot. Thank you, sir. So that's about it. I don't think we will stretch it any beyond this. We will come back at around 10 p.m. to talk about this case during Speak Up, and then we shall talk in much more detail about what the High Court has said, because what appears to be a mixed order, one going against Riya Chakravarti, one going against the sister. Let's see what happens, because end of the day, what is important is that we should know what happened to Sushant Singh Rajput. What happened to the man who was the shining star of Indian cinema? Suddenly he went away on the 14th or 13th of June. What happened? Was it a suicide or was it something else? That's what the nation wants to know. That's what the world wants to know. That's what his fans want to know. That's what his family wants to know. And that's exactly what we as a journalist also want to know. Thanks a lot for connecting. Stay connected. Keep coming. Keep connecting. And take care. We shall bring all the details that's there relevant to the case. And whenever there's something big, we will be talking about it. It's not as if we are not interested in this. We are very much interested in it, because any story that is big, we are with it. So thanks a lot for connecting. Come back again and we shall continue talking about the case during Speak Up India